पढ़ा मेरे को 71 है। हिस्ट्री जैसे रीड करते हैं ज्योग्राफी मैंने हमें करना है बहुत अंदर किया हिस्ट्री में बहुत अच्छा किया बायो में बहुत अच्छा किया केमिस्ट्री सबसे अच्छा है हमारा बायो का हाईएस्ट है 65 इंग्लिश लिटरेचर का वही था भाई लिटरेचर तो मस्त किया भाई इंग्लिश सीधे एक्चुअल सीधी से आ गया पूरा लिख दिया होगा पूरा तो सीधी अरे बराबर की जरूरत नहीं थी चेकिंग अरे हां एक पेज है पूरा तीन बच्चे हेलो एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून sit up I'm saying after a long time two of you busy writing exams yes, sir. How did it go you did well नहीं कितना जो आई तो मतलब समझ लो 50 है लोगों को दूसरों से क्या बात है मैं ठीक ठाक है कितना तूने मेरे को तो 30 आया अच्छा तो कहाँ गलती हुई मेरा इसलिए मेरे को थियरी में मेरे मार्क्स कटे सर मैं हमारा एग्जाम में तो मार्क्स ही करता हूँ सर मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा हुआ है बहुत सबसे अच्छा पेपर था तीन ने वाली तो वॉल्यूम में सेम टू सेम थे कुछ चेंज नहीं था अच्छा तो आगे रख सकते हैं सेम इजीली होता है ओके So don't worry, just analyze where did you go wrong, okay, and work on it. We can spend time. And जो भी तुम्हारे doubts है, we'll arrange for reply to you. Okay. Rajesh. हमारा पेपर कलेक्शन भाई फिजिक्स में भी कीवर्ड ढूंढ रही है नाम के लिए तो उसका एक फिजिक्स का ही है ना अरे फिजिक्स में कितना है क्या कर रहे थे तो लास्ट सर साउंड 118 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड नोट करना था पर हमारे एग्जाम में साउंड के न्यूमेरिकल जा रहे थे पूरा साउंड करता रहा था घर पे किया ठीक है हमने साउंड का ग्राफ वो सब कर लिया था हाँ some terms related to sound wave और वो बेंचर एक्सपेरिमेंट किया था हाँ ठीक चलो अभी जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते एनालाइज करो देखो अभी साउंड वेव में क्या है यस वो वॉल्यूम जीरो ले लिया देखो कोई भी वेव को हम ऐसे बनाते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है ना तो ये प्रेशर डेंसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बता सकता है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे या तो हमारा वेव कैसा होगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऑसिलेशन कैसे होता है हाँ मतलब पैरेलल होता है तो ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव हुआ तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है कैसे होता है एक्स डायरेक्शन में इसलिए मैंने एक्स को यहाँ लिखा है भले वाई एक्सिस है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से लिख रहे हैं कहां से मेन पोजीशन से इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स मतलब उसको हम बोलेंगे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो होगा इक्वल टू ए ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस एंड माइनस तो क्या है ये प्लस ए माइनस ए एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको ठीक है सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऑसिलेशन ऐसा होता है और ट्रांसवर्स वेव में कैसा होता है ऑसिलेशन परपेंडिकुलर
और वेव कैसे ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों केस में वेव ऐसे ही ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेव वेलोसिटी, ठीक है। यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, यानी 1 2 3 4 पार्ट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो डिस्टरबेंस यहाँ स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पहुंच गया, इधर, समझे। जब तुम्हारा पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, वेव कहाँ पे पहुंच गया, यहां तक। दिस इज कॉल्ड, ये, हाँ, ये वन वेव का ऑसिलेशन हुआ ये। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक जाने में भी टाइम पीरियड हुआ टी, और डिस्टरबेंस में यहाँ पहुंचने में भी टाइम पीरियड कितना हुआ, टी। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वेव ने, ये जो डिस्टेंस ऑफ द डिस्टरबेंस है वो, उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। समझ आया। जितना टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में लगा, ऐसे जाके ऐसे आने में, उतना ही टाइम एक वेव साइकिल को यहाँ पहुंचने में लगा, ठीक है। सर वो लैम्डा है। हाँ, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लगता है, वन टाइम पीरियड, ठीक है। और वही एक वेव साइकिल हुआ, वन वेव साइकिल। ये सब सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ द वेव, ये सब सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। तो अब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये जो मैक्सिमम पार्ट है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। जो पीक है। और अगर ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, हाँ, उसके लिए हम इसको बोलते हैं क्रेस्ट। पीक, पीक का नाम चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वेव। कंप्रेशन फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव, क्रेस्ट फॉर ट्रांसवर्स वेव। और ये जो वैली है, वैली, वैली को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव, या फिर ट्रफ बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। समझ आ गया, वैसा है। तो यहां से यहां, पीक टू पीक, ये डिस्टेंस भी तुम्हारा लैम्डा है। और इसको टाइम कितना लगेगा, टी। या फिर ट्रफ टू ट्रफ वाला डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। यानी यहां से यहां जितना टाइम लग रहा है हर बार उतना ही टाइम लगेगा, मोशन रिपीट होगा। समझ में आ गया। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन। इज दैट क्लियर। ये सब हम कर चुके हैं लास्ट क्लास। तो वेव वेलोसिटी कितना होगा, वेव स्पीड ले लो, चलो एक ही चीज है। वेव स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वो हो जाएगा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। क्योंकि हमको मालूम है जब हमारा वेव इतना डिस्टेंस चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड, ठीक। एंड वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। भाई टी टाइम एक ऑसिलेशन के लिए लगता है ना। सो फॉर इन टाइम टी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज वन। टी टाइम में कितना है, वन ऑसिलेशन। 1 सेकेंड में कितना हुआ, 1/t ऑसिलेशन, करेक्ट। तो 1/t ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहा है, और 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसलिए 1/t इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, या वेव स्पीड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्लास में यहां तक हुआ था। नाउ वी विल स्टार्ट, विल गो फर्दर and discuss characteristics of wave.
साउंड वेव। अब दो साउंड वेव को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करें? समझे, हमारे पास दो साउंड वेव है, तो दो साउंड वेव में क्या क्या चीज अलग हो सकती है? उसकी लाउडनेस, उसकी पिच और उसकी क्वालिटी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? लाउडनेस, दूसरा क्या है? पिच, तीसरा क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी। अब loudness of the sound depends on the amplitude. Okay, so it depends on amplitude. Amplitude. Meaning what? So let us say I cause a vibration. So if I hit it slowly, if I hit this slowly, okay. Now this the second one was louder, right? So the vibration is bigger, bigger amplitude. So this is bigger amplitude. Initially it is smaller amplitude. Okay. So when the oscillation is taking place with a bigger amplitude, the sound will be loud. Okay. If the oscillations are taking place with smaller amplitude, the sound will be feeble or soft. Okay. So if I give you two waves, right? Let's say I got two sound waves. So these are the displacement type. We have above sound 1 and sound 2. Which is louder, sound 1 or sound 2? Sound 2. Sound 2 is louder because there it is. Let's say A, and this is like almost two times A. You know? So this is almost two times. So this is louder. Okay. But again, now let's say this is very clearly identifiable that if the amplitude is bigger, the sound appears loud. Okay. Okay. But if there is the same sound, one sound, let's say now there is just one sound, and people hearing the sound are different. Okay. One person may feel that sound is not loud enough. The other one may say it is too loud, it's noisy, it's too loud. Like music. Some people like rock music. Okay. So even if it is played at a very loud sound, he will enjoy it. So like we are so fun. लेकिन वहीं पे there is somebody who doesn't like rock music या उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, okay, बोले कि it is not loud enough, ऐसा भी हो सकता है. So loudness is experience based. The same sound can appear different to different people depending upon their ears sensitivity. So how to like judge them? How to correctly judge a particular sound whether it is loud or not? Yeah. So loudness, anything which is experience based, right, is not objective. It is subjective. Okay, it's a subjective analysis of any sound. Okay. So loudness, therefore, is a subjective property. Subjective image. Okay. So what is
How to measure the loudness of sound objectively? So we measure the loudness of sound objectively by what is called as intensity. Okay. So what is the objective property of loudness? Intensity is objective property for a given sound. Subjective means it is perception based. Why subjective? Because it is experience or sense. It depends on gaining experience or sensitivity of listeners. Okay, so that's why it is subjective. But once you measure it, the intensity is going to be fixed for a given sound. Okay, so intensity is objective property. Objective property means measurable property. This is opinion or experience based. Is that clear? So do opinion matter or fact matter? Fact. Okay. So how do we define intensity? So intensity is defined as it is equal to sound energy. How do we measure sound? Sound is energy. So it is defined as sound energy flowing per unit area per unit time. Correct? Let us say there is an air tunnel, air pipe from I am speaking, so I am the sound source from here to your ear. Okay? So pipe is a cross section. Let's say it's a round tunnel in both your ears. So when I am speaking, so it is crossing the cross section, right? So imagine a air tunnel of diameter 1 meter square. So that will be unit area. The amount of sound energy going through the cross section, how much? Unit area of cross section in each second. That will give you the intensity. Is that clear? So, but what is energy upon time? Power. So, intensity is also given as power flowing per unit area. That's why the unit of intensity is watt per meter square. So when we speak from cylinder, the paper folded into a coil, why does it seem louder? Because it undergoes multiple reflection. We will cover reflection of sound. We'll come to megaphone and all. That is the application part of it. Okay? So right now when we are speaking, my sound is going in all directions. But when you speak through a pipe, the sound is forced to go in the straight direction. So the intensity increases in a given direction. But area difference. Area exists and Okay? So intensity increases, more energy. Okay, so loudness clear. So you can differentiate loudness basis the amplitude, and there is a relation dependency. Intensity is directly proportional to square of amplitude. Intensity of sound is directly proportional to square of amplitude, and it is inversely proportional to the distance of the listener. Distance. Now others are taking exams. Many are absent today, right? 3, 4 at least.
सर आयुष तुमने बोलती कि अभी एग्जाम खत्म हुआ जो थोड़ा रेस्ट ले। कौन बोल रहा है? आयुष की मम्मी। आयुष वर्किंग पैन की वजह से जा रहा है। ठीक है चलो। तो लाउडनेस में और कोई डाउट है? जिम पैन की वाला बात। तो बड़ा है। अच्छा अच्छा दुबई। हाँ दुबई। ओके ओके क्या? दुबई। नहीं वो वैकेशन में दुबई जाएगा बात कर रहा था। ये तो गुजरात में लटक गया था जाके। गुजरात नहीं कच्छ में है गुजरात में। ओके नेक्स्ट जो था कैरेक्टरिस्टिक क्या था? पिच। ठीक है तो लाउडनेस में क्या होता है? साउंड सेम होता है खाली क्या बढ़ता है एम्पलीट्यूड। मतलब अभी मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ और अभी मैं जोर से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि जो सोर्स है वो सेम है ना? तुम्हें पता है कि उधर से ही बात कर रहा है लेकिन लाउडनेस बढ़ गया है कम हो गया तो साउंड चेंज नहीं हो रहा। साउंड में एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। सुनने में तुम्हें पता चलता है कि सोर्स वही है ठीक है। लेकिन अब पिच। पिच क्या होता है? of sound is depends on frequency. ठीक है तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो पिच क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ठीक है तो समझो ये बोल रहा है हाँ तो मुझे समझ जाएगा कि ये बोल रहा है। तुम बोल रहे हो तो मुझे समझ जाएगा कि तुम बोल रहे हो। ये बोलेगी तो मुझे समझेगा कोई और बोल रहा है। तो तीनों साउंड अलग है तो हर एक डिफरेंट साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। ठीक है तो यूनिक यूनिक साउंड जो सुनाई देता है हर अलग साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग। ठीक so the number of oscillations produced by a sound source is per second is called frequency. ठीक तो पिच भी सब्जेक्टिव है। मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है अब सेंसिटिविटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगी। ठीक है कि लो पिच और हाई पिच। अभी देखो a sound of a given pitch may sound high or low to a listener depending on sensitivity of his sensitivity of his ears. तो पिच भी सब्जेक्टिव हो गया। तो पहले हाई पिच और लो पिच होता क्या है? How does a sound of high pitch appear than a low pitch? तुमने अभी टेस्ट क्लिक किया है ना? हाँ ट्रिलनेस एंड Darkness of the sun. explain. I mean, how will you explain? So how high pitch sound? Let's say if I ask you to differentiate between a male voice and a female voice, who has high pitch and who is low pitch? It is a high pitch. So female voice. And Both male voice voice. to me.
Which sound is sharp? High. So female voice is sharp. And this is flat. Okay. So it is or sharp. This is flat. So which is easy on here? High pitch or low pitch? Low pitch. Low pitch is easy. Not blue. Okay. Nothing against females. But this is more sharp and it will develop with piercing. So have you seen females fighting and males fighting? Which fight can you stand? Obviously, right? Because males will get less on more of punches. Females will really. So, ऐसा है. Let's come on to musical instruments. What instruments produce sharper sound than? Piano. Let's say you have a guitar. So in guitar you have strings of different frequencies. Correct? So what strings are like sound high pitch? Sharpest on the last one, the heaviest on the bottom. The thickest string has the lowest frequency. So the bass guitar is mostly thick. thick strings, right? And even in a guitar, you have thicker string are of low frequency. The thinner or the string with high tension strings, they are more songs. They will say tan, whereas the other one are like that. Okay. So, or in a percussion, you have in percussion, you have two sets of instruments, right? So, which has high pitch and which has low pitch? That is high pitch. This has High pitch. high pitch. This has Low pitch. So this produces dub, that kind of a sound. Whereas this is sharp. It's very sharp. Okay. So the membrane here oscillates very fast. What does it depend on area? Does it It depend on? depends on the dimension. Yes. Frequency depends on the dimension. And the tension also. Dimension tension. Yes. Yes. Is that clear? So basically, this in musical terms, this is called treble. Ah. Okay. It's called bass. This is called bass. Although it is written as BASS, but it is called bass. BASE, BA-double-S. Okay. So bass and treble. Right. So flute will have high bass or high treble. Okay, like that. And drums would have high bass. So you can make the settings according to your preference, sound preference. To enhance the audio, what do you do? When it's the Audio, like there are music and there is a vocal also going on. So sometimes music is dominating the vocal. So what will you do? increasing the treble. Yes, then vocals will be more clear. Okay, so it's like that. Clear? Okay. Now with technology, everything is possible. Okay. So I have told you what is the objective, how to measure a sound of a given pitch objectively by measuring its frequency. So a sound of unique frequency is called a tone. So it is a sound of unique frequency. Okay. And then what is a note? So when you say when you have a musical note, it is a mixture of many frequencies. Like in an orchestra, you have many things playing. Maybe at different frequencies also. That is composition. So every composition mixes many sounds of many frequencies, which are pleasant to hear. So note, it is a sound
consisting of or sound consisting of many frequencies. Okay. For example, octet. Octet is a musical note. In Indian, the thing octet is what? Sa re ga ma, What's sa re ga ma, pa da ni sa. Octet, 8 frequencies. So it is a note, musical note. Understood? octave? Octave. वही octave ही तो बोला मैंने. Octave या octet? Octave. Yes, octet is octave. Yeah. Octave बोल रहे क्या? Is an octave. I don't know, musical में उसको octave बोलते हैं क्या? तो केमिस्ट्री में ऑक्टेव होगा केमिस्ट्री में ऑक्टेव होगा Octet has to have something 8. Okay. तो एक ही चीज हो. ठीक है. अब क्या बचा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में? अरे Quality. are you taking a note or underlining all this? Is it given? All of this is given in your one. नहीं सर क्वेश्चन तो ये लिखो पहले. Intensity का दिया है कि नहीं? Density का दिया है. सब दिया है. Non-super response of the relative. नहीं equal to energy upon it. वो लिखा था कि नहीं तुमने पहले? नहीं. So this is bad. I do it for you. The rate of the. ठीक है. मैं कल लेक्चर में भी देख के लिखी हाँ वो ठीक है. देख लेना. वही So okay. This will help you understand and answer questions. Then the last property or characteristic of sound is Quality. quality. In brain. So if you have to draw the waveform, okay, pitch में अगर waveform बनाना हो तो how will you differentiate? Let's say you have one sound like this. Okay. So sound 1 is like this. Sound 2 में क्या है? तो ये क्वालिटी लाउडनेस ये सेलेना की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हाँ लेकिन सीबीएसई में है. सेलेना में 10th में बहुत डिटेल में दिया. बहुत ज्यादा डिटेल दिया है ना. सेलेना में नहीं दिया है. नहीं दिया ये तीन नहीं दे. Specific sentence में दिया है. तुम लोग सीबीएसई हो कि आईसीएसई? सीबीएसई में ये चैप्टर खत्म हो गया. तो अब देखो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? साउंड 1 का या साउंड 2? तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा टाइम से कंपेयर करने हैं. जितने टाइम में यहाँ पे एक वेव साइकिल बन रहा है उतने टाइम में यहाँ पे कितना साइकिल बन गया? 2. तो नंबर ऑफ साइकिल्स इज मोर इन द सेकंड साउंड. तो फ्रीक्वेंसी हियर इज डबल. अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2f1. 2 times f1. फ्रीक्वेंसी इज डबल. ओके. एम्पलीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है. So when you speak in a normal conversation, everybody is putting in same energy. So loudness is same, but yet sounds are heard differently because they have different frequencies. intensity is also same Intensity may be same, but sound is heard differently because the source is different. Understood? This is how you differentiate. Why do we need characteristics of sound? To differentiate one sound from the other sound. Okay. Now the third property or characteristic. There may be two sounds of same amplitude and same frequency, yet you may hear them as different sounds. Now what? Here amplitudes are same, but frequency are different, so different. In case of loudness, one is more energetic than the other, so that is appearing different experience. Still, there could be another category
where both amplitude and frequency are same, yet the sound is different. So that is called quality or timbre. I just gave the example. The sources are different. Let's say a flute and a guitar played at same level and at same frequency, still the sound is produced by different sources. So the wave pattern will be different now. So in this case, they have same amplitude and frequency, yet they sound different. Here we go. Waveforms. Due to difference in the waveforms generated by them. Okay? Or due to different sources. है ना? Sound sources are very different. तो भी समझो sound वन हमारा उसका waveform ऐसे है. जैसा है. Sound को हमारा कैसा देखते हैं? देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, yet the sound appears different because the wave pattern is different. ठीक है? तो इसके लिए वो अलग अलग सुनाई देते हैं. फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम. ओके? ये हो. अभी हमारे पास कितना टाइम है? 13 minutes. हाँ, तो हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं. एग्जांपल 1 2 3 पेज 118 पे न्यूमेरिकल है. ये कर लिया था हमने. हाँ सर फिर कास्ट हो रहा है. ये करवा दिया था. और कौन सा करा था? 2 नहीं बस. वो क्या है वर्ड नहीं. Sir, first or second किया है. फर्स्ट टाइम पेमेंट किया है ना. हाँ. थर्ड नहीं किया. तो थर्ड क्या है? इसके टेंशन. थर्ड और फोर्थ है. पेज 119 पे थर्ड न्यूमेरिकल है. क्या है? फटाक से पढ़ो. टाइम पीरियड दिया हुआ है वेव का. मोशन वेव ऑफ टाइम पीरियड. हाँ बोल ना. क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स. टी दिया और वी दिया. वी कितना दिया है? 15 मीटर per second. वेवलेंथ कैसे निकलेगा? हाँ. v is equal to lambda upon t होता है. therefore lambda कितना हो गया? v into t. करेक्ट. तो इससे ये निकल जाएगा. और दूसरे में क्या निकालना है तुमको? the horizontal distance between a wave crest and its adjoining wave trough.
चलिए So इसमें करें। one crest and one wave is nothing but wavelength. ठीक है, समझ रहे हैं। पहले क्या निकालना है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स, ये निकालना है, यहां से यहां का ये डिस्टेंस निकालना। तो ये हाफ ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस निकालो। और उसके बारे में पहले मीनिंग को तो लैम्डा अपन ठीक होगा डायरेक्टली लैम्डा इक्वल वो भी कर सकते हैं अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो, बट बेसिक फॉर्मूला हमारा किस फॉर्म में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वहां से डिस्टेंस निकालो तो तो यहाँ आप निकाल नहीं है ना अब क्या ये कितना हो गया? 150। निकालना क्या है इसमें? इतना तुम्हें आना चाहिए कम से कम। सर आता है पूछा ठीक है, ये हो गया। तो दूसरे वाले में क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, और क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा। तो ये हाफ हो गया ना, हाँ समझ जितना यहाँ से यहाँ उतने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, दिस विल बी लैम्डा बाई 2, मतलब कितना? 150 बाई 2, मतलब 75। समझ गए? फिर एग्जांपल 4 में क्या दिया है? Wave pulse on a string moves a distance 8 meter in 0.5 seconds. नहीं होगा तो थोड़ा रुक जाऊंगा मैं 5 मिनट और। सर हमारा ब्रेक चला जाएगा क्या हो जाएगा? इतने महीनों का तो ब्रेक लेके आ रहे क्लास में। सर पर एग्जाम से ब्रेक नहीं ले रहा एग्जाम में पढ़ना ही था तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या दिया है? 8 अपॉन 0.05। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द वेव दिया, तो इतना हो गया। तो 8 into 100 divided by 5, 20, 16, 160 मीटर पर सेकंड है। यस सर ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये हो गया। बी में क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑन स्ट्रिंग if frequency is 200। तो वेलोसिटी हमारा निकला 160, फ्रीक्वेंसी दिया 200। ठीक है, आ गया 0.8 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, v is equal to न्यू लैम्डा या फिर v is equal to लैम्डा बाय टाइम। सो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म है। यस सर बाय बाय। बाय सर बाय दैट ये कट तो निकालना पड़ेगा ना ये कट किया तो निकालना पड़ेगा ये भी कट हो जाएगा कौन सा वाले करने मैच में ये सॉलिड शुरू कर हाँ सॉलिड शुरू करना है। क्या फिल्टर लगाया हुआ है लोग ने सही फिल्टर है क्यों देख ना फिल्टर देख तो कौन सा सॉलिड शुरू करना है सॉलिड शुरू आई यार मैं तो मस्त नहीं जो करी ब्रो रिजेक्ट दे दिया डॉक्टर का बिल्कुल नींद है जी कौन सा ऑडियो ऑडियो वाला नहीं और सच में